रखी एक गुरु दी आस, तेरे विचों ओढ़ सुगंधियां नी, तेरे विचों ओढ़ सुगंधियां तप जाने समुद्रों पार, ते विच असमाने उड़ना नी, ते विच असमाने उड़ना, तेनू परियां करन शिकार, दिन अज अज होके कटने, निवें होके रहना संसार, तेरी सतगुरु रखिया करेगा नी, तेरी सतगुरु रखिया करेगा, जीवां दा करी उधार, करे आरज अजाइब हाथ जोड़ के नी, करे आरज अजाइब हाथ जोड़ के, जागे भाग होई सतगुरु दयाल, करा लख लख शुकराने उस दे नी, करा लख लख शुकराने उस दे, मैनू मिल गया गुरु किरपाल, मैनू मिल गया गुरु किरपाल। तब
तन तन कृपाल प्यारा अपनी चरनी लालिया पंच शब्द नारा सिमरन दस के अपने बीच मिला लिया तुई दवैत ना भेद मिटा के एको शब्द सिखा गया दर्द निवारण दुखिया वाले सच्चा सतगुरु आ गया तब से से ठाने आके सा गया दर्द निवारण दुखिया वाले सच्चा सतगुरु आ गया हर ठाते कृपाल प्यारा अखियाँ बीच समाया है कट कट दे बिच बसदा सोना दिल दे हर ठाते कृपाल प्यारा अखियाँ बीच समाया है कट कट दे बिच बसदा सोना दिल दुनिया दे सब इल्म चुरा के एको शब्द सिखा गया दर्द निवारण दुखिया वाले सच्चा सतगुरु आ गया तब दे ठारे आके नागमी बरसा गया दर्द निवारण दुखिया वाले सच्चा सतगुरु आ गया दास अजायब अर्जा करना सुन कृपाल प्यारिया दर तेरे थे डटे आके रखी लाज दातारिया दास अजायब अर्जा करना सुन कृपाल प्यारिया दर तेरे थे डटे आके रखी लाज दातारिया नाम दान दी चोरी पर के चोरी करन सिखा गया दर्द निवारण दुखिया
कुछ लोग ऐसे प्रश्न करते रहते हैं कि संत मत का अनुभव नाम लेकर के कितने बरस में खुला होता है, यानी कितने महीने में अभ्यास करने से मिल सकता है। Some people, some disciples ask this question that once we have been initiated in Santmat, within how much time can we get experience? कुछ लोग ऐसे फोन पे भी बात करते हैं कि हमें नाम लेके 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, मेरे अंदर कोई झलक दिखाई दे दिया, शब्द सुनाई नहीं दिया, ऐसा क्यों? Some people also call on the phone and they say that uh, I have been initiated for 4 years or 5 years and I have not seen any light inside or I've not heard any sound inside. जब हम पूछते हैं कि आप कितना घंटा बैठते हैं, तो कहते हैं 1 घंटा, 1.25 घंटे के ऊपर बैठने को नहीं होता है। हाँ, तो बताओ 1 घंटा, 1.25 घंटा बैठ करके और अनुभव चाहे तो कैसे मिलेगा? क्योंकि संतों का जो हुक्म है, एक सत्संगी के लिए 2.5 घंटा, 24 घंटे में 2.5 घंटा, यानी रोज का 10वां हिस्सा भजन सुमरन में लगाना चाहिए। तो 2 घंटा सुमरन ध्यान, आधा घंटा भजन। So when I ask them how much time they have spent for their meditation, and in the masters say that you have to give 1/10 of your time of the day. So in 24 hours, you have to at least give 2.5 hours for meditation. Out of that, 2 hours you should give for doing your Simran and Dhyan, and about half an hour for bhajan. So only then one can say that he or she can get some experiences when they sit uh, continuously for that period. तो जब आप लगातार 2.5 घंटे बैठेंगे, क्योंकि मन बहुत पहले भाग दौड़ करता है, सुमरन में लगता नहीं, हम उसको सुमरन से जोड़ना चाहते हैं, मन दुनिया के चिंतन में भागता है। हम फिर पकड़ के लाके सुमरन जोड़ते हैं, फिर समय मिलता है भाग जाता है। तो कहते हैं ये दौड़ दौड़ के थकता है। जब 1.5 पौने 2 घंटे दौड़ने के बाद में थकता है मन, और थकने के बाद ही स्थिर होने लगता है। जब मन स्थिर होएगा तब तो नाम का आनंद मिलेगा। So when we sit, continue get experiences. When we sit for our meditation, the mind does not allow us to sit. It goes wanders here and there. It doesn't focus on the Simran. So to quieten the mind, it takes nearly 1.5 hours, because once the mind keeps wandering here and there, after some time it gets tired, and then it starts focusing on the Simran. So that itself takes about 1.5 hours. तो इसलिए उसके बाद में मन स्थिर होने लगता है। जब मन स्थिर होएगा तब तो थोड़ा नाम की लज्जत मिलेगी, लेकिन हम उतना टाइम बैठते नहीं, हम बैठते 1 घंटा 1.5 घंटा के अंदर ही, और जिससे हमें कामयाबी नहीं मिल पाती। So only after that 1.5 hour, the mind will start focusing on the Simran, and then we can enjoy uh, that concentration, and we can enjoy that experience. So till such time, if we sit only for 1 hour or 1.5 hour, we will not be able to make the mind still, and therefore we will not be able to get any kind of experiences. क्योंकि संत मत प्रेम और प्यार का रास्ता है। जब हम गुरु के चरणों में प्रेम प्यार लगा के और विरह साथ लेके हम भक्ति में बढ़ते हैं, तब जाके थोड़ा सा सुमरन अच्छी तरह से होता है। लेकिन हम दुनिया का ख्याल लेके भजन बैठते हैं तो मन कभी स्थिर नहीं हो पाता है। The path of Santmat is that of love. And when we sit with love and affection towards our master, and we have the pangs of separation from our master, wanting to go and meet him, then when we sit for meditation in that frame of mind, then it helps us to sit
but usually we sit with all worldly thoughts in our mind, and we carry the whole world when we sit for meditation. So therefore we are not able to get that kind of focus. फिर भी हम खेती के काम करते हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं और घर कुटुंब परिवार में रहते हैं। कुछ कुटुंब परिवार का भी कलह होता है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आपस में मन मुटाव होता है, या तो और कहीं जहाँ काम करते हैं वहां पे कुछ ऐसी बातें आ जाती है जिसका असर मन पे पड़ जाता है। तो ये सब भी हमारे भजन नहीं बनने का कारण बनता है। We are engaged in our businesses or work, or we are engaged in agriculture, or we are doing our farm work, or even in the families. Many a times situations arise where we get into some kind of an argument in the family, or we have some problems there, or in work related also there are some problems that arise. So all these kind of things that happen, they have a impact on the mind, and that is why we are not able to get those experiences or focus properly. तो हमें चाहिए भजन में बैठने के पहले कोई भी एक प्रेम भरी वाणी, जो संतों ने बहुत सारी वाणियां लिखी है भजन के रूप में, कोई भी एक ऐसा भजन गा ले जिससे कि गुरु के प्रति प्रेम और प्यार पैदा हो, और वो प्रेम प्यार लेकर के हम भजन में बैठे हैं तो धीरे धीरे जरूर कामयाबी मिलती है। So therefore, before sitting for meditation, if we make it a practice to sing a bhajan, sing a bani written by a master, then those banis always carry a lot of love and affection for their masters. So we will be able to bring about those thoughts and bring a proper frame of mind before sitting for meditation. और शालिग्राम ने 5 प्रेम वाणी किताब लिखी है, वो इतने मोटी मोटी है 5, और वो पूरा प्रेम वाणी ही है। तो उसमें से भी कोई एक प्रेम वाणी का शब्द पढ़ के जिससे अपने अंदर प्रेम और प्यार पैदा करके बैठे, तभी जो मन थोड़ा बहुत स्थिर होता है, नहीं तो मन स्थिर नहीं हो पाता। Even Shaligram ji has written a book which contains of 5 volumes, and he has also प्रेम written. वाणी It is called Prem Bani, and there is a lot of love and affection in that Bani. If you read a page of that also, it will help. और अनुभव जो है, जो धीरे 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 अभ्यास से होता है वो कायम रहता है, और जो गुरु की कृपा से या कभी ऐसे नामदान के समय में दिखाई देता है वो सब कायम नहीं रहता है। And these experiences, when we do meditation every day, then the experiences that we get gradually, as those experiences build in our meditation, those experiences remain continuous and they will stay with us. But when we have this one off experience at the time of initiation, or with the grace of the master sometime, those experiences do not stay. They We just get a one off experience. एक जगह कबीर साहब भी कहते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आवे फल होए। अगर फल ज्यादा लाने के लिए या पहले फल आ जा बोल के तुम ज्यादा से ज्यादा पेड़ को पानी दो, लेकिन फल तो अपने सीजन पे ही आएगा, समय पे ही आएगा। Kabir Sahib also says that uh, the uh, progress will happen at its own time, and it is like the gardener who gives a bucket of water to the tree every day, and when he gives that regularly, the tree will bear fruit at the right time, at the right season. If he wants the tree to bear fruit earlier, and he puts more water, or he does more frequently, that is not going to change. The tree will bear fruit at the time, uh, at the season only. Like that, our meditation will also happen over a period of time. हाँ, कुछ लोगों का वजन सुमरन का
बैठक ज्यादा नहीं रहती है और कभी कभी उनके अंदर विरह होने से कृपा हो जाती है और वो चढ़ाई करने लगता है तो उनकी वो सहन शक्ति नहीं रहती है तो उनका शरीर कांपने लगता है और यहाँ तक कि थोड़ा अंदर लाइट देख के झटका लगता है, गिर पड़ते हैं। ऐसे भी बहुत प्रेमियों को हमने देखा है। Also, if the frame of mind is, if we have not made that habit, we don't have that habit, but once in a while we suddenly have a lot of love and affection for the master, and we sit in that, in meditation, and with the grace of the master we get some experience, then we are not able to withstand that experience. Many people, when they see light inside, eh, as a one off experience, they give up meditation, they faint also, or they shake so many times. So all these is because they have not been doing it regularly, and they've not built uh, mind accordingly. बाबा जी के सत्संग में एक दो प्रेमी ऐसे गिर पड़ते थे, हालांकि वो अच्छे अनुभव वाले थे। हाँ, एक तो राम दुलार सिंह थे और एक और भी ऐसा कोई प्रेमी था जिनकी रूह अंदर जाती थी लेकिन वो हमेशा झटका लगे गिर पड़ते थे। In Somnath Babaji's time also, there were a couple of devotees. Whenever they would sit for meditation, they would get that experience and they would fall back. So whenever they sat, this kind of a thing would happen. तो कहते हैं ऐसे ही तुलसी साहब का एक प्रेमी शिष्य हृदय, उसके अंदर विरह था, गुरु के प्रति प्रेम प्यार था, वो भजन में बैठा, उसकी रूह अकस्मात चढ़ाई करने लगी क्योंकि विरह होवे, प्रेम प्यार होवे तो रूह बड़े आराम से चढ़ाई करती है, लेकिन इसका अभ्यास नहीं था और तो उसका शरीर कंपायमान होने लगा। तो उसकी औरत ने देखा और वो चिल्लाई गई कि ये कोई भूत पकड़ लिया है इसको, ऐसा वैसा करके बाहर भाग के गई और बाद में मुल्ला को बुलवाया। So once, in one of the disciples of Tulsi Sahib, Hriday, when he sat for meditation, he also had very strong pangs of separation when he sat that particular time. And whenever we have very strong love and affection for the master, we have very strong pangs of separation from the master, the soul very easily starts moving upwards. So when he started getting that experience, his body started trembling. Now, seeing his body tremble like that, his wife felt that some ghost had taken control of his body, and she went out running, and she went to a mullah to call the mullah to address that. मंत्र तंत्र के लिए तो कहते हैं बाद में मुल्ला को बुला के लेके आए, भीड़ मच गई और वो मंत्र तंत्र कर रहा है, पानी ऊपर छिड़क रहा है, मंत्र तंत्र कर रहा है। जब थोड़ा टाइम के बाद में इसकी रूह नीचे उतरी, ये देखता है तो घर में इतना लोग खड़े हैं, तो बोलता अरे क्या हो गया? तो औरत कहती है आपको अभी भूत पकड़ा था ना, मैंने अभी वो मुल्ला उसको हटाया। So when he sat, so in his meditation, he was trembling, and his wife ran out and called the mullah, and the mullah came, and he saw that, he felt that the some ghost had uh, some ghost had taken over, and then he started chanting all kinds of mantras, etc., and a large crowd gathered. So when Hriday got up from his meditation, he was shocked to see so many people around him uttering or chanting all mantras and everything. So he asked his wife what happened, and then she said, "No, some ghost had possessed you, and therefore I called the mullah, and now with his chanting, he's been able to take out that ghost from you." तो तब से वो समझ गया कि तब से वो दरवाजा बंद करके भजन बैठता था। So after that, he started closing the door whenever he sat for meditation. तो ऐसे ऐसे कांड भी हो जाते हैं। So all such things happen in our meditations. तो इसीलिए कम से कम 2.5 घंटा बताया जाता है, उसके ऊपर करे तो अच्छा है, लेकिन प्रेम प्यार लेकर के भजन करे तो भजन बनता है, प्रेम प्यार के बगैर भजन नहीं बन पाता है।
So that way, if we sit for 2.5 hours, we will be able to make the most of our meditations. But we need to sit for 2.5 hours. If we sit for less, then we are not going to get those kind of experiences. तो चाहिए कि कोई भी प्रेम की वाणी पढ़ें, अपने अंदर प्रेम पैदा करें और प्रेम को लेके हम सुमरन और ध्यान में प्रेम प्यार से जुड़ें, तो धीरे धीरे कुछ वर्षों में कामयाबी हासिल होती है। So we should sing some Bani of the saints, which gets love and affection for our masters. And when we sit in meditation with that kind of love and affection, then over a period of time, we will be able to develop that meditation and also get some experiences. ये अब जो अनुभव है, ये उन सबके कर्म अलग अलग हैं, किसी के ज्यादा हैं, किसी के कर्म कम हैं। जो कम है तो उनको जल्दी अनुभव प्राप्त हो जाता है, थोड़ा ज्यादा है तो उनको थोड़ा लेट होता है, लेकिन अनुभव सबको आता है। So each one also gets the experiences according to the karmas that they have. Some people have higher burden of karmas and some people have lower burden. So where the burden of karmas is not so heavy, they may get experiences earlier. And where the burden of karmas is heavier, then it may take some more time for them to get experiences. But everyone will get their experiences if they sit like this. तो इसीलिए कहते हैं भाई, भजन सुमरन को बोझा मत समझो, ये अपना एक ड्यूटी है, जैसे अपने आत्मा के उद्धार के लिए और ये काम करना बहुत जरूरी है। हम गुरु के पास क्यों गए हैं कि फिर बार बार इस दुनिया में जन्म मरण में नहीं आना। So we have to sit in our meditation and we should not look at this as a burden. It is our duty in this life to meet the true purpose of this life, and therefore we should do our meditation so that we don't have to come again and again in this world. हाँ, तो समय बड़ा अच्छा है, वातावरण शांत है, हमें इससे फायदा उठाना चाहिए, आंख बंद करके सुमरन और ध्यान से जुड़े। So the time is good and quiet, and let's make the most of it. Let's close our eyes and get connected to our Simran and Dhyan.